যে অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কাৰাপ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। ই ফেক ভিডিঅ' মই নাজানো, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমানত ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ লৈ কি চৰ্চা চলি আছে। অসমৰ উন্নতিলৈ চৰ্চা হৈ থকা নাই। অসমৰ উদ্যোগৰ আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ বৃদ্ধি লৈ চৰ্চা চলি থকা নাই। অসমৰ চাহ উদ্যোগ লৈ চৰ্চা চলি থকা নাই। অসমীয়া সংস্কৃতি, যি সংস্কৃতি দৰ্শন প্ৰায়ত জুবিন দা, ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই যি দৰ্শন কৰিছিল, সেই বৰ অসমৰ কথা বাহিৰত চলি থকা নাই। বাহিৰত কি চলি আছে? বাহিৰত কি চৰ্চা চলি আছে? যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে কিমান মাটি, কিমান বাগান, কিমান সম্পত্তি অসমৰ ভিতৰত আৰু ভাৰতৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কমাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটোৱে হ'ল আমাৰ আজিৰ তাৰিখৰ পৰিচয়। যি অসমৰ পৰা আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চাহ যায়, তেল যায়, অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, খেলৰ ক্ষেত্ৰত, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত গৈ মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হয়, এই অসমলৈ আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত চৰ্চা যে অসমৰ मुख्यमंत्री पवन खेरा जी यहाँ पर जीएसटी के अलावा असम के लोगों को एक और टैक्स देना पड़ता है, वो है मामी टैक्स। मामी को टैक्स दिए बिना कोई काम नहीं होता। आप लोग टैक्स समझते होंगे, हम असम में इसको चंदा कहते हैं, क्योंकि असम में यहाँ चंदा তোলা এটা কালচাৰ এটা আছে। ভাল কামৰ কাৰণে, বিহুৰ কাৰণে ভাল কাম। কিন্তু যোৱা 5টা বছৰত যিকোনো ক্ষেত্ৰত মামিক চন্দা নিদিয়াকৈ কাম নহয়গৈ। मामी चंदा एक नया चंदा यहाँ पे शुरुआत हो गया। किमान दुखर कथा, এইখিনি কথা আমি অসমৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ ভিতৰত পাতিয়ে থাকো, কিন্তু এটা আমাৰ কথাখিনি বাহিৰলৈ গৈছে আৰু আমাক এটা লজ্জাজনক স্থিতিলৈ ঠেলি দিছে, যাৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ লাগে। हम नहीं चाहते कि असम के बाहर असम को लेकर सिर्फ एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा। हम चाहते हैं कि असम को लेकर हमारी प्रतिभा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा राजनीतिक योगदान, हमारे स्थानीय उद्योगपति, इसको लेकर चर्चा हो कि भारत के विकास में असम की कितनी अहमियत है, इसको लेकर चर्चा हो। पर लेकिन चर्चा इसकी विपरीत हो रही है। কিছুমান ফেক ভিডিঅ' বিজেপিয়ে লৈ আমাৰ মানুহখিনিক অলপ আৰেষ্ট কৰিছে। কি ফেক ভিডিঅ' মই নাজানো, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কাৰাপ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। কি ফেক ভিডিঅ' মই নাজানো, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমানত ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। এৰেষ্ট কৰিলে কি হ'ব? মানুহৰ মনত যি কথা সোমাই গৈছে এইটোতো লুকাব নোৱাৰে। যি সঁচা কথা এইটো লুকাব নোৱাৰে। আৰু অসমত ইমান জেল নাই যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিক যদি আৰেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে। আমাৰ এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দল ইমান শক্তিশালী হৈছে, মই চেলেঞ্জ কৰিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, অসমৰ ভিতৰত ইমান জেল নাই আমাৰ কংগ্ৰেছ মানুহক জেললৈ পঠাব। এজনক পঠালে 10জন থিয় হৈ আছে। আৰু যদি কিবা এটা ফেক কথাৰ কাৰণে যদি জেল পঠাব পাৰা যায়, এৰেষ্ট কৰিব পাৰা যায়,
प्रथम मुख्यमंत्री निजके अरेस्ट कर लगे। आज अगर फेक वीडियो पे अगर अरेस्ट हो सकता है फेक चीजों पर, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना चाहिए। राहुल गांधी का बॉडी डबल, मैं पाकिस्तानी एजेंट, गोटे माटी जिमान माटी सम्पत्ति আছে सब মানুহ দি দিব। এই ইমান যে ভুয়া কথাবোৰ যে কৈ আছে, প্ৰথমতে তেওঁকে अरेस्ट কৰিব লাগে, কিন্তু এইখিনি তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগৰ নেলি কাণ্ডৰ লৈ তেওঁ কিছু কাগজ ওলাবলৈ বিচাৰিছে। ঠিক আছে, যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেলি কাণ্ড লৈ কাগজ ওলাবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ফালৰ পৰাও দাবী যে আমি শুনিছো এটা টাডা চাৰ্জशीट লুকাই গ'ল। अगर पुराने कागज दाखिल करने का इतना ही शौक है तो हम भी अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री को कि एक टाडा चार्जशीट वो गायब हो गया, उसको भी दाखिल करें और लोगों के बीच में उसका फोटोकॉपी दे। मानवेंद्र शर्मा रिपोर्ट, उसको भी लेकर एक चर्चा होना चाहिए। बीजेपी निजे आनिছিলে हारोडा और लुइस बर्जर, जे हारोडा लुइस बर्जर कांडत हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक जेलলৈ পঠাব, এইখিনিও অলপ ফাদিল কৰক, এইখিনিও আৰম্ভ কৰক। তাৰ ওপৰতো চৰ্চা হোৱাটো বিচাৰো। হাৰোডা আৰু লুইস বৰ্জাৰ, অৰুণাচলৰ এজন ডাঙৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাম লৈছিল নিজৰ সুইসাইড নোটত, সেইটো লৈ চৰ্চা হ'ব লাগে। মণিপুৰৰ এজন উগ্ৰপন্থী কুকি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এফিডেভিটত লিখিছে যে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰত আহিছে। এইখিনিও হ'ব লাগে, এইখিনিও ৰাজহুৱা কৰক, ৰাইজে গম পাওক যে টাডা চাৰ্জशीट কোনে লুকালে, ৰাইজে গম পাওক যে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক কোনে হত্যা কৰিলে, ৰাইজে গম পাওক লুইস বৰ্জাৰ লগত কোন জড়িত, ৰাইজে গম পাওক হাৰোডা কেলেংকাৰীৰ লগত কোন জড়িত, ৰাইজে গম পাওক যে অৰুণাচলৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ অন্তিম নোটত কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাম লৈছে, ৰাইজে গম পাওক যে কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাম লৈছে। এয়া হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যি অসমত আমি অলপ দিন আগতে প্ৰায়তঃ তৰুণ গগৈদেৱক স্মৰণ কৰিছোঁ, যি অসমত আমি প্ৰায়তঃ জুবিনদাৰ জন্ম জয়ন্তী তেখেতৰ উপজা দিনটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ, আজি এই অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা অৱস্থা চলি আছে। আৰু যাৰ ফলত ৰাইজ গম পাইছে, ৰাইজ একত্ৰিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পৰাজিত কৰিবলৈ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বাহিৰে ভোটাৰ লিষ্ট, ভুৱা ভোটাৰ লিষ্ট আনি নিজকে বচাবলৈ আৰু কোনো উপায় নাই। কিন্তু এই ভুৱা ভোটাৰ লিষ্ট যোগেদি অসমৰ অস্তিত্ব, অসমৰ স্বাভিমান, অসমীয়া মানুহৰ মৰ্যাদা, অসমীয়া মানুহৰ ভোটৰ শক্তিটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে। মাটিটো দিলেই বাহিৰৰ মানুহখিনিক, ৰেলৰ চাকৰিবোৰ দিছে বাহিৰৰ মানুহখিনিক, ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাবোৰ দিছে বাহিৰৰ মানুহখিনিক, এতিয়া ভোটৰ ক্ষমতাটো এতিয়া বাহিৰৰ মানুহখিনিক দিবলৈ বিচাৰিছে। আজি অসমৰ ভিতৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ, থলুৱা মানুহৰ মাটি অধিকাৰ, সংস্থাপনৰ অধিকাৰ, ঠিকা কৰা অধিকাৰ, ভোট দিয়া অধিকাৰৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ দল সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই সংগ্ৰামত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, সহায় কৰি যাব, আগবঢ়াই লৈ যাব। মই পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ লগৰ মাজত থকা বাবে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈ निर्वाचन आएंगे, निर्वाचन चले जाएंगे, लेकिन भारत वासियों का जो विश्वास केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर एक जमाने में था, बिहार निर्वाचन के बाद उस विश्वास में ऐतिहासिक गिरावट हुई। हमने कुछ दिन पहले संविधान दिवस उद्यापन किया और केंद्रीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक
एक संस्था है। और बिहार में जिस प्रकार से निर्वाचन के बीच 10,000 रुपए लोगों के बीच में बांटने का अवसर मिला, इस प्रकार का चुनाव आयोग का अगर कार्रवाई रहेगा, लोगों का विश्वास और गिरता रहेगा। बहुत कुछ गिर चुका ही है, लेकिन अगर बिहार के निर्वाचन में अगर सबसे बड़ी किसी को क्षति पहुंची है तो विरोधी दलों से ज्यादा केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पहुंची, क्योंकि लोगों का विश्वास उनसे उठ रहा। और इसलिए मेरी मांग ये है कि भारत पूरे विश्व का आईटी हब है। हमारे भारत के वासी गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनियों की पूरी आईटी टेक्नोलॉजी हम संभालते हैं। जो सरकार यूपीआई की इतनी बात करती है, जो सरकार जैम और आधार की बात इतनी करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल वोटर लिस्ट से क्यों डरती है? राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप ठीक है, स्मार्ट इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, तो कागज कलम से आप सरकारी कर्मचारियों से इतना काम क्यों करवा रहे हो, जिनके द्वारा आज एक महीने में 24 लोगों की आत्महत्या, जब पूरा काम डिजिटल हो सकता है। फ्रॉड, फेक सब कुछ खत्म हो सकता है। हमने आधार क्यों किया? अगर आज के तारीख पे हम वोटर लिस्ट में कोई ब्राजीलियन मॉडल का नाम हम देख रहे हैं 100 बार आ रहा है, उसके नाम पर वोट भी पड़ रहे हैं। चुनाव की वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं और डिजिटल वोटर लिस्ट करने के लिए ये झिझक रहे हैं। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग थोड़ा सा भी अपने रेपुटेशन को लेकर चिंतित है, लोगों के बीच में उनके विश्वास को लेकर अगर चिंतित है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करें, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करें। ये पवन खेरा जी ने बात की, मैं इनको पूरा सपोर्ट करता हूं कि असम की मीडिया नोएडा मीडिया से थोड़ी अलग है, बहुत अलग। असम की मीडिया हिमंत बिश्व शर्मा जी के अनुसार चलती नहीं, और असम के मीडिया पर भी ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना जितना एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, उतना ही हमारे समाज के चौथी स्तंभ का है, चतुर्थ स्तंभ एक एक कर्तव्य। सम्पूर्ण বিশ্বাস যে অসমৰ মিডিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়াতকৈ পৃথক, আৰু অসমৰ মিডিয়া ভুৱা ভোটাৰ তালিকা নোহোৱাটো বিচাৰে। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে देखिए, हमारे भारत में हमारे फोक कल्चर है, हमारे विभिन्न जनजाति हैं, जिनकी परंपराएं अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनकी भाषा अलग, और बार बार भाजपा का एक ही मंशा है कि विभिन्न भारत के और असम के जनजातियों की जो उनकी जो परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, विविधता है, पहचान है, कस्टम्स है, उसको खत्म किया जाए। और सब कुछ नागपुर में जो सोचते हैं उसके अनुसार झारखंड के आदिवासी, असम के बोडो आदिवासी, हमारे जनजाति, मेघालय में खासी ट्राइब, सिर्फ नागपुर के अनुसार हम काम करें। ये एक जरिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर कर उनको खत्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। भारत अनेकों भाषाओं का देश है, अनेक जनजातियों का देश है, अनेक परंपराओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश, और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नागपुर से पूरे देश का जनजाति उस पर शासन करे। ये बस एक जरिया है, इसकी पूरी जो राजनीति है हम समझते हैं, और इसीलिए हम जनजातियों के साथ हैं, और विभिन्न हमारे समाज में जो हमारे परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम उनका सम्मान करते हैं।
বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে 100 গগন খেৰাজী